తందనానా హి తందనానా పురే తందనానా భళా తందనానా భళా తందనానా భళా తందనానా బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానా హి తందనానా పురే తందనానా భళా తందనానా భళా తందనానా
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेरमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेरमामृतात्
if you look at the Rudram and if you look at the Namakam part, there are very strange names of the Lord. We say that the Nicherave Paricharaya Ranya Nam Patayanam, the one who roams through forests, we pray our salutations to him. Like that, there are very kind of funny and inexplicable or ununderstandable words that come through the Rudram. What Swami is basically telling us that wherever you see in the universe, wherever you see in the world around, it is pervaded by the Lord. Okay, so the Namakam is nothing but our ability to see the Lord in everything around us. So whether it is in the lightning, whether it's in the thunder, whether it's in the blade of grass, whether it's in a forest, whether it's in mountains or in oceans, everything is filled with the presence, the pervasiveness of the Lord. Wow. And that is what Namakam says. And therefore, there is only one being from whom I can ask something. Okay, because only he exists everywhere, and that is Chamakam. And whatever I want to ask, I will not ask the world, because the world on its own does not exist. Whom to ask? Ask only the Lord, because only the Lord is capable of giving you. And so the Chame, that is, we ask for everything from children to prosperity to, to status, position, power, whatever we may ask for. Okay, we will ask only from God. Nothing, no other entity is worth asking for because it doesn't exist. Yes. The only entity that exists is the Lord. Wow. So how beautifully he has explained to us that the Namakam and Chamakam is all about keeping God as the center of our lives. Wow. In fact, in another discourse, Bhagwan gives another lovely meaning of Namakam and Chamakam. This is a discourse on August 9, 2006. Swami says, Sri Rudram is comprising of Namakam and Chamakam. The Namaka emphasizes the aspect of detachment, and the Chamaka stresses on the aspect of desire. But Swami says the essence of both is same. The essence of both is one. And I was trying to understand this. A senior brother shared how once when a few students were with Bhagwan in the interview room, the discussion moved on towards karma and how you can come out of the cycle of birth and death, and how you cannot be bound to the actions that you're performing. And in that context, Swami suddenly said, but there is a secret by which you cannot face the consequences of your actions. You can be out of the cycle of facing the consequences of your actions. And so all the boys got curious, and so they started thinking, what could it be? Is it selfless service, Nishkama Karma and all that? And Swami said, no. The easiest way to ensure that none of the actions attach themselves to you is whatever you do, offer it to God. And one boy got so excited, Swami, is it so simple, Swami? If I just do this, will nothing affect me? Swami said, yes. Whatever you do, Sai Shwaratmana Mastu. Can you do it with this feeling? Then it will not touch you. And now, as you said, Namakam is to see God in everything. God is He is the resident of the mountains. He is there as the one who's flowing in the rivers. Now, if God is there in everyone, God is there in the ignorant, in the arrogant, He is there in the intellectual, He is there in the irreverent. At the same time, if we can see God in everything, so the only way we can worship God is to see God in everything. Seeing God in everything is the worship of God. I think, and when you have that kind of an attitude, obviously you are not attached to anything. So that is the detachment that Namakam gives you, because you are not attached to anything that you do, because you are only worshipping God and offering everything to God. Now, when do we do the Chamakam? And what do we do in Chamakam? As you said, we ask for everything in this world, anything that will give us happiness now and hereafter. And in Chamakam, when do we ask? We ask after we have recognized that God is there in everything. So when we are asking God for all the material things, we are asking not the things. We are asking because we have recognized that God is there in everything. Our focus is God. We want not the objects. We want that because of what is the permanent thing in those objects. So when we have that kind of an attitude, then every desire is sublimated. So that's what Swami is telling, the aspect of detachment and the aspect of desire. Everything is, the essence is one. Because ultimately,
you are not desiring objects. You are only desiring God in the objects. And they say, the best way to attach yourself to God, to detach yourself from the world, is to attach yourself to God. And I think that is what is in essence Chamakam and Namakam. And as you mentioned, Bhagwan, that's a very beautifully says in the discourse that Sri Rudram is the essence of all the Vedas. ब्रह्मांड नायका बाबा प्रतिपुरीश्वर बाबा ब्रह्मांड नायका बाबा प्रतिपुरीश्वर बाबा प्रतिपुरीश्वर
चांद और सूरज तुमने बनाए, चांद और सूरज तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, ब्रह्मांड नायका बाबा पतिपुरीश्वर बाबा, ब्रह्मांड नायका बाबा अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारक नगरी तुमने बसाई, 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 शिरडी पड़ती तुमने बनाई, तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, ब्रह्मांड नायका बाबा पतिपुरीश्वर बाबा, ब्रह्मांड नायका बाबा चांद और सूरज तुमने बनाए, चांद और सूरज तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, नदियाँ सागर तुमने बनाए, ब्रह्मांड नायका बाबा पतिपुरीश्वर बाबा, ब्रह्मांड नायका बाबा पतिपुरीश्वर बाबा, अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारक नगरी तुमने बसाई, अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारक नगरी तुमने बसाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, ब्रह्मांड नायका बाबा पतिपुरीश्वर बाबा, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवा, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवा, अरुणाचल
शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवा अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा इह पर सुखदायका ईशा इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका ईशा इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका साई इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका साई इह पर सुखदायका अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवा अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा अक्षयलिंगा आत्मलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा तेजोमय विग्रहलिंगा इह पर सुखदायका ईशा इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका ईशा इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका साई इह पर सुखदायका इह पर सुखदायका साई इह पर सुखदायका ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः 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 अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवा हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय साई
तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय शिव शिव शिवाय नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय साई ओम तत्सत् नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायण
नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायण करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायण करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायण अल्लाह तुम महावीर येशु साई नारायण अल्लाह तुम महावीर येशु साई नारायण हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायण हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायण महादेवा महेश्वरा साई नारायण नटनागरा दुःखभञ्जना साई नारायण करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायण अल्लाह तुम महावीर येशु साई नारायण हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायण हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायण महादेवा महेश्वरा साई नारायण जय जगदीश हरे जय गोविंद
ब्रह्मानन्द जय गोपाल हरे साई नित्यानन्द ब्रह्मानन्द जय गोपाल हरे अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव हरिनारायण साई नारायण हरिनारायण साई नारायण हरिनारायण साई नारायण साई नारायण जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता 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 जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे नित्यानंद ब्रह्मानंद जय गोपाल हरे नित्यानंद ब्रह्मानंद जय गोपाल हरे अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव हरिनारायण साई नारायण हरिनारायण साई नारायण जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता जय देवी भारती
जय गोविन्द हरे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म మానవులకు 5 విధములైనటువంటి యొక్క విచారణ శక్తులు ఉంటున్నవి. There are 5 types of thinking power in every human being. దానినే ఒక జ్ఞానము అన్నారు. And that has been described as gnanam. ఈనాడు wisdom. సామాన్యంగా ప్రపంచమంతటి కూడా సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి జ్ఞానము ఒకటి. The అదే type, తెలివితేటలతో కూడినటువంటిది. the type of knowledge which is available in the world and which is all pervasive దీనినే is one మొట్టమొదటి type. దాన్ని బుకిష్ నాలెడ్జి అన్నారు. This type of knowledge is called bookish knowledge. ఈ బుకిష్ నాలెడ్జి నుంచి కూడా సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జిగా మారిపోయింది. This bookish knowledge has given birth to superficial knowledge. ఈ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జి లోపలే మన జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాము. We are wasting our entire life in this superficial ఈ knowledge. వయసునందు ఈ మానవునికి ఉండవలసినటువంటి జనరల్ నాలెడ్జి కామన్ సెన్స్ జీరోగా ఉంటుండాలి. What is required as general knowledge and common sense for man is a big zero in కనుక him. జనరల్ నాలెడ్జి కామన్ సెన్స్ అనేటువంటిది కేవలం విద్య వల్ల లభించేటువంటిది కాదు. General knowledge and common sense cannot be acquired through books. నిత్య జీవితంలో కర్తవ్య ధర్మం వల్లనే మనకు ఈ యొక్క జనరల్ నాలెడ్జిని మనము పోషించుకోవచ్చును. One can protect and acquire general knowledge through daily living సమాజ life సేవ properly. వల్ల సమాజ సంపర్కం వల్ల ఈ జనరల్ నాలెడ్జిని మనం పోషించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. It is possible to foster general knowledge by being a servant of the society and serving the ఇంకా society. నాలుగవది డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జి. The fourth one is discrimination knowledge. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జి ఈనాడు ఏ విధంగా ఉంటుందని మనం విచారించేసినప్పుడు When you think of how this discrimination ఇది knowledge is functioning, స్వార్థపరమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ గా ఉంటుండాలి. man is using it only as a selfish తమ discrimination దోషాలు knowledge. తాము కొంతవరకు సమన్వయం చేసుకునేటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ గా ఉంటుండాలి. Discrimination knowledge is used only to defend his own defects. ఇది వ్యక్తి సంబంధమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ గా ఉంటుండాలి. This is only an individual discrimination knowledge. కనుకనే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ పెడమార్గం పడుతుండాలి. That is why this discrimination is going on the wrong ఇది path. సరైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ కాదు. This is not proper discrimination. సమష్టి సంబంధమైనటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ మనకు కావాలి. Discrimination collectively applicable is what is needed now. ఎవరికి వాడు సమర్థించుకునేటువంటి ఒక డిస్క్రిమినేషన్ చూస్తున్నాడు. నాది రైట్, నాది రైట్, నాది రైట్. Man is using discrimination to defend and say that it is his right, his right. ఇది స్వార్థపరమైనటువంటి ఒక డిస్క్రిమినేషన్. This is selfish discrimination. అందువల్లనే యువకులైనటువంటి వారు చాలా పెడమార్గం పట్టడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుండాలి. That is the reason why the youth are prompted to go on the wrong path. ఇది ఫండమెంటల్ డిస్క్రిమినేషన్ కావాలి. It should be transformed into fundamental discrimination. ఐదవ విచారణా శక్తి అత్యవసరము. The fifth type of knowledge is very ఏది అది essential. ఐదవది ప్రాక్టికల్ డిస్క్రిమినేషన్.
ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జిగా ఉండాలి. And that is practical knowledge. ఈ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జి లేకపోవటం చేతనే ఇన్ని విధమైనటువంటి యొక్క ఆపోహలకు గురి అయిపోతున్నారు మానవుడు. Man is getting innumerable doubts because he doesn't have practical knowledge. ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జి కావాలి. Practical knowledge is essential for everything. ఈనాడు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏమిటో వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. Today, man has not been able to ఏ వ్యక్తి understand. తనకు సంబంధించినటువంటిది తన యొక్క అనుభూతిగా భావిస్తున్నాడు. Each one is considering on the basis of his own limited experience. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलारति अंधुको मंगलारति अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो